Thank you, Dr. Singh, and all the guest gathering. आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि इस प्लेटफॉर्म पर हमने बहुत अच्छी प्रस्तुति देखी और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि जो गीता का जो गीत है उसकी सबसे पहले इम्पोर्टेंस बायोलॉजी हम ऐसे जान सकते हैं कि हम एक दूसरे से जो शब्द से वार्तालाप करते हैं और एक दूसरे को कोशिश करते हैं कि हम शब्दों से जीतें या उसको हराएं, लेकिन कृष्ण भगवान ने हमारे को एक ऐसा गीत दिया जब वो बंसुरी बजाते थे, ये बाहर वाला गीत है, तो उसके लिए कोई शब्दों की जरूरत नहीं होती थी। उस गीत को सुन के हमारे अंदर एक ऐसी बायोलॉजी होती है कि हम सिर्फ गीत को सुन के, चाहे वो गाय थी, गोपी थी, राधा थी या सखियां थी, वो सब एकत्रित होकर म्यूजिक को सुन के आ जाते थे। उसमें कोई शब्द भेद नहीं था। लेकिन इससे भी, म्यूजिक से भी ऐसा क्या इफेक्ट होता है, क्या बायोलॉजी होती है कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारी पुतलियां अपना शक्ल बदल लेती हैं। तो कृष्ण भगवान की जो ये म्यूजिक है, गीत का एक और गहरा अर्थ है कि जो ब्रह्मनाद है, ये हमारा असल में जो शब्द है, उस शब्द जब हमारे शरीर के अंदर चलता है, जब वो एक डिफरेंट बायोलॉजी प्रोड्यूस करता है, तो वो जो उस बायोलॉजी का जो वर्णन है वो गीता में, मेरा इनकाउंटर जब गीता से हुआ तो बीइंग डॉक्टर, यू नो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव कि गीता में कोई साइंस है या कुछ मैटर है। तो हमने पहले ये किया कि अगर भगवान है और उसकी प्राप्ति हम कर सकते हैं तो उसकी कुछ बायोलॉजी होनी चाहिए कि जिस प्रकार से मान लीजिए अगर आप पानी पीते हैं और वो पेशाब बन के शरीर से बाहर निकलता है, तो उसकी कुछ बायोलॉजी होगी, कोई ना कोई ऑर्गन है, टिश्यू है जहां वो प्रोसेसिंग हो रही है। तो हम सब जानते हैं कि हमारी किडनी होती है, लेकिन काफी लोगों को पूछे कि किडनी कहाँ होती है तो कोई यहां बताएगा, यहां बताएगा, यहां बताएगा, हालांकि किडनी हमारे पीछे होती है। तो वो हम काफी अनभिज्ञ रहते हैं कि असल में क्या चीज कहां हो रही है। हमें पता भी नहीं होती है कि किडनी हमारे पीछे, जब तक कि उसमें दर्द नहीं होती है। तो उसी प्रकार से जब मेरा गीता के साथ इनकाउंटर हुआ तो मुझे शुरू में लगता था ऐसे कि गीता में तो बहुत ही, ये तो अमिताभ बच्चन की फिल्म की तरह है कि क्या होता है। अमिताभ बच्चन की देखो एक फिल्म में जब वो हम बच्चे थे, अमिताभ बच्चन ऊपर से डाई मारता था, पुलिस गोली मार रही है, तो हम सोचते ओ यार गिर गया, मर गया, पानी में चला गया, अब तो पता नहीं बाहर आएगा कि नहीं। अगर एक अमिताभ बच्चन मर जाता था तो दूसरा उसका डबल रोल आ जाता था। जब डबल रोल मर जाता था हम सोचते थे क्या है, फिर जब बड़े हुए तो पता लगा अच्छा अब 3 घंटे होने वाले हैं कि अब ये वाला मरेगा, जो ट्रिपल रोल वाला अब कोई नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से हम कहते थे गीता के 18 अध्याय हैं। और देखो हमारा जो हिंदू धर्म है वो गुरु प्रधान होता है। तो मैंने कहा बड़े अचरज की बात है कि जो तो बुरे लोग हैं, कौरव है, उनका सिर्फ जो 3 गुरु हैं उनके, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अपना कृपाचार्य जी, और जो अच्छे लोग हैं, पांडव हैं, उनके सिर्फ एक गुरु हैं, कृष्ण मात्र। तो हमने कहा इसमें तो कौरव वैसे ही रेस जीत गए कि 3-3 गुरु धारण कर लिए हैं और यहां एकमात्र एक गुरु है। और हमने कहा ये देखो अमिताभ बच्चन की फिल्म की तरह कि 18 चैप्टर तक तो कृष्ण भगवान मर नहीं सकते क्योंकि एक गुरु है और गुरु प्रधान है हमारा धर्म, तो कैसे हम कृष्ण भगवान को मार सकते हैं। तो इट इज समथिंग लाइक एक, यू नो, अमिताभ बच्चन मूवी की वो 3 आदमी चाहे वो ट्रिपल रोल वाले मरेंगे तो वहां तो पहले एक गुरु मरते हैं, फिर दूसरे गुरु मरते हैं, फिर तीसरे भीष्म पितामह काफी टाइम तक रहते हैं, फिर वो चले जाते हैं। तो 18 दिन पूरे हो गए। तो हमने कहा इट इज वेरी फिट है बिल्कुल। तो लेकिन फिर हमने ध्यान किया, हमने गुरु महाराज से प्रार्थना की कि महाराज हम ये ठीक भी सोच रहे हैं कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। तो हम एक दिन ध्यान करके सो गए। तो हम जब अगले दिन उठते हैं तो ये नहीं कि हमने सोचा, मैं ये वाक्य इसलिए आपको बता रहा हूं, अनुभूति क्या होती है कि तुम ये देखो पहले गुरु कौन है, कृपाचार्य। पहले गुरु का पहला शब्द क्या है, क्री। कृष्णा का पहला शब्द क्या है, क्री या क्रू, या जैसे भी आप बोलना चाहते हैं। मेरठ में, बंगाली में सब अलग अलग बोलते हैं, संस्कृत में तो क्रू है, कृपाचार्य एंड कृष्णा। दूसरे गुरु है भीष्म पितामह।
भीष्म का बीच वाला शब्द क्या है? श, और वो भी आधा। और कृष्णा का बीच वाला शब्द क्या है? तीसरे गुरु कौन है? द्रोणा। द्रोणा का आखिरी शब्द क्या है? ना। और कृष्णा का आखिरी शब्द क्या है? तो कृष्णा कौन है? कृष्णा इज द सब्लिमेशन ऑफ द 3 गुरुज। तब मुझे अनुभूति हुई कि नहीं, ये अमिताभ बच्चन की फिल्म नहीं चल रही है, ये कुछ गहरी साजिश है जिसको समझना, डीकोड करना। तो मैं इसको, जब मेरे को ऐसा लगा तो मैं थोड़ा भटका। मैंने कहा मथुरा जाया जाए, देखा जाए, वृंदावन जाया जाए, कि अनुभूति मेरे को ही हो रही है कि किसी शास्त्र में लिखा हुआ पर यार तुम कॉपी पेस्ट कर लिया। मैं कहा पता लगा रजनीश जी लिख के गए थे। वो बोले डॉक्टर साहब आप क्या बोल रहे? तो रजनीश जी बोल के गए हैं। तो भवन को पता लगा ये किसी शास्त्र में लिखा नहीं गया है आज तक। तो वैसे ही हुआ कि जब मैं एक बार ड्राइव कर रहा था तो श्लोक लगा हुआ था। अब उसका आप लोगों ने भी सुना होगा कि वो श्लोक क्या था? धूमेन विर्यते, ये चैप्टर 3 का 38 वर्स है कि जस्ट एज द फायर इज कवर्ड बाय स्मोक, अ मिरर इज कवर्ड बाय मल, एंड द एम्बर इज कवर्ड बाय द वूम, सो इज द नॉलेज कवर्ड बाय द डिजायर। मतलब कि जिस प्रकार से जो अग्नि है वो धुएं से ढक ली जाती है, जिस प्रकार से जो भ्रूण है, यूट्रस में, गर्भ में जो बच्चा होता है उसको भ्रूण कहते हैं। भ्रूण है वो झिल्ली, जिसको इंग्लिश में हम कोरियन कहते हैं, डॉक्टरी लैंग्वेज में कोरियन से ढका होता है। उसी प्रकार से किसी शीशे पे अगर हम मल लगा दें तो वो ज्ञान आच्छादित हो जाता है। तो ये क्या रिप्लाई है मोटी सी? जब क्योंकि अर्जुन भी दुखी हो जाता है कृष्ण भगवान की सुन के, कहते हैं भगवान आप, ये आत्मा है, अजर है, अमर है, कटती नहीं है, गलती नहीं है, गिल्ली नहीं होती है। सर मैं बहुत सुन लिया पर मेरे को दिख नहीं रहा है कुछ, मेरे को दिखती नहीं आत्मा। मेरे को आत्मा क्यों नहीं दिखती है, मुझे समझाएं। तो कहते हैं देखे अर्जुन ऐसा है, मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूं। देखो कृष्ण भगवान ने बड़ा अच्छा किया, सोचना पड़ता है। गीता की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सोचना पड़ता है, अनुभूति होनी पड़ती है। मैं यही सोचता था, मैं क्यों में थोड़ा नाराज भी था गीता लिखने वालों से, और कि ये वर्ष में क्यों लिखी हुई है, ये एकदम एक स्टोरी के माध्यम से क्यों नहीं बना दिया। सीधी सी स्टोरी बनाते कंफ्यूजन नहीं होता, इस वर्ष का ये मतलब है, उस वर्ष का ये मतलब है। कृपाचार्य जी कुछ और बोलते हैं, द्रोणाचार्य जी कुछ और बोलते हैं, भीष्म पितामह कुछ और बोलते हैं, समझ नहीं आता है। जितने आचार्यों के पास जाओ सब अलग अलग बोलते हैं। तो हमने कहा कहानी लिख देते, क्यों वर्ष क्यों लिखे? तो वर्ष में भी एक बायोलॉजी छुपी है। जब आपको एक अनुभूति होती है तो स्टेप वाइज अनुभूति होती है। तो जैसे क्वांटम, अगर आप समझेंगे ना, क्वांटम फिजिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट में चल रहे हैं, क्वांटम ने यही बोला, और वो पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, कभी वेव की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन ऑर्बिट में जब चलते हैं तो ऑर्बिटल एनर्जी आती है। सारी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स सब उसके ऊपर बेस्ड है, क्योंकि ऑर्बिट में है। अर्थ अपने ऑर्बिट पे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न सब अपने ऑर्बिट पे चल रहे हैं। सब एक मेगा क्वांटम है और एक माइक्रो क्वांटम है। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, ये भगवान ने बोला देख अर्जुन तेरे को 3 एग्जांपल देता हूं। कैसे? कि जिस प्रकार से भ्रूण छुपा है, अग्नि छुप जाती है, और जिस प्रकार से जो दर्पण है वो छुप जाता है। तो जब मैंने यूट्रस का सुना, मैंने कहा ये भगवान मल बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से शीशे के ऊपर मल लग जाए। हम अपने पुराने गांव के घर में जाते हैं तो वहां अगर पुराना जब कोठी खोलते हैं तो उसमें शीशे में धूल जमी होती है, उसको साफ करना पड़ता है। तो हम सोचे धूली लगी होती है तो भगवान ने धूली क्यों नहीं लिखा, वाई ही इज राइटिंग मल। तो किसी ने बोला मल का मलेन होता है, मलेन का मतलब धूली भी ले सकते हैं आप, ये है वो है, संस्कृत के तो जो मतलब मर्ज निकालो आप, 1000 मतलब निकाल लो। तो हमने कहा नहीं, बीइंग डॉक्टर अगर मल लिखा है इसका कुछ बायोलॉजी होगी। तो हम वही फॉर्मूला लगाया, गुरु महाराज का ध्यान करके हम सो गए। सुबह उठते हैं तो क्या आता है कि ये नहीं कि हमने सोचा इसलिए बता रहा हूं मैं, ये वाक्य वैसा ही कि स्टेप वाइज आपको ज्ञान आता है। तो जिस प्रकार से जो भ्रूण है, भ्रूण झिल्ली से कवर होता है, तो हमने कहा उसकी सप्लाई क्या होती है। तो हमने उसकी सप्लाई कहा S1 डॉक्टरी लाइन में उसको नर्व सप्लाई करती है। जैसे यूट्रस को भी एक नर्व्स आती है, तो नर्व्स कौन सी होती हैं, S2, S3 एंड S4। फिर दूसरा आया
कि जिस प्रकार से जो अग्नि है वो धुएं से ढक ली जाती है। तो अगर अग्नि क्या होती है, जठरा अग्नि, हम कहते हैं खाना खाते हैं पच जाता है हमें, तो जठरा अग्नि जो हमारी इंटेस्टाइन की सप्लाई होती है वो क्या होती है, S2, S3 एंड S4। अब निचले वाला क्या तीसरा बोला कि जिस प्रकार से कि जो मिरर इज कवर्ड बाय द मल, तो तीसरा मल कहां स्टोर होता है, हमारी एनल कैनाल में, जो लास्ट में आंत का हिस्सा होता है उसको एनल कैनाल कहते हैं। उसका जो एम्ब्रियोजेनिसिस होता है वो अलग होता है, उसको एक्टोडर्म हम बोलते हैं, वो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर उसकी खास बात होती है वो कई बार आपने देखा होगा बच्चे ऐसे पैदा होते हैं उनके लैट्रिन का रास्ता रुका होता है, क्योंकि लास्ट में ये चीज जुड़ती है। कुछ बच्चे आपने देखा होगा लिप्स के यहाँ फटे होते हैं उनके लिप्स, क्यों, क्योंकि वो आपस में जुड़ते हैं, हमारी बॉडी में ज्वाइनिंग होती है। तो अगर आपको याद होगा बचपन में गेम खेलते थे जिसको हम बोलते हैं कि जो पजल्स होती हैं, तो वो हम ऐसे करके उसको लगाते थे इकट्ठे, तो एक जैसे दो बाजू लगा दो, दो टांग लगा दो, एक सिर लगा दो, तो इसको हम बोलते थे जो पजल को करने के लिए। उसी प्रकार से ह्यूमन बॉडी बनती है। तो ये भ्रूण जो होता है ये इसी प्रकार से बनता है। तो ये जब लास्ट में इन्होंने बोला कि जिस प्रकार से जो मल है, मल द्वार की क्या सप्लाई है, अगर कोई डॉक्टर होंगे तो उनको जानते होंगे, S2, S3 एंड S4। देन आई सेड कि ओहो, जो ये चीज है ये मूलाधार चक्र का गति बता रहे हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन देखिए कितनी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है इसमें, कि कहते हैं अर्जुन देख तुम्हारा ज्ञान क्यों आच्छादित हो जाता है, क्योंकि आप तीन चीजें जो है वो सारा फोकस न्यूरल एनर्जी जितनी भी आपकी मानसिक एनर्जी जो है, यू आर ऑल फोकसिंग योर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इनटू द 3 organs and they have a common supply S2, S3 and S4, and your neural energy is getting wasted only in the Mooladhara chakra. तो इसी प्रकार से टाइम की नजाकत जानते हुए मैं लास्ट चीज पे आऊंगा कि मैंने एक एक्चुअली बुक लिखी है, डिटेल आपको अप्लाइड स्पिरिचुअल बायोलॉजी में मिल जाएगा। दिस बुक इज पब्लिश्ड बाय JP ब्रदर्स, जो मेडिकल स्टूडेंट है वो जानते हैं, दिस इज द इंडियाज बेस्ट JP मेडिकल ब्रदर्स, दे आर द बेस्ट पब्लिशर्स ऑफ मेडिकल लिटरेचर, एंड दिस इज आई थिंक फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड स्पिरिचुअल बायोलॉजी in very detail it has been written, and especially it is for doctors and MD and higher studies PhD program, so it is a bit difficult book, not that easy. And last but not the least, there is a last proof what I want to give, कि सबसे दुख की बात जो मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि कृष्ण भगवान को जो सबसे ज्यादा ब्लेम किया जाता है, वो एक वर्ष में पढ़ना चाहूंगा कि उसमें ये लिखा जाता है कि कृष्ण भगवान ने हमारे धर्म को, हमारे लोगों को जात पात में बांट दिया। चैप्टर 4 वर्स नंबर 13 ये कहते हैं कि चारों वर्णों की रचना मैंने गुण और कर्म के विभाग के अनुसार की है, यद्यपि मैं इसका करता हूं, फिर भी मुझे अकर्ता और अविनाशी जानो। मीन्स द 4 डिविजन ऑफ द सोसाइटी वॉज क्रिएटेड बाय मी अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटीज एंड वर्क। तो इसमें अभी एक्चुअली मैं सोच रहा था हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करेंगे, बट यहां थी नहीं। अगर आप देखेंगे तो लोग उसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि हमने जो कृष्ण भगवान को ये बोलते हैं कि नहीं, कृष्ण भगवान ने तो ये बोल दिया कि हमने सबको जात पात से बांट दिया है। और ये एक कार्टून मैंने बनाया था कि दिस इज कृष्ण भगवान कहते हैं कि जितने लोग आप बैठे हैं हम उन्हें आपको 4 में डिवाइड कर दिए, लेकिन कृष्ण भगवान ये नहीं कह रहे थे। इसके लिए दूसरा कार्टून है जो ये मैंने बनाया है कि कृष्ण भगवान ये बताना चाहते थे कि इट्स ए जिग्सॉ पजल की गेम है। जब भ्रूण पैदा होता है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, एक ही भ्रूण के 4 पार्ट्स होते हैं टू स्टार्ट विथ, जिसमें कि हमारी जो 10 कर्म इंद्रियां, जो नर्व्स हैं, जो ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां होती है, टू सिंप्लीफाई, जो 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां जो है उनको मैं जब इकट्ठा करता हूं तो भ्रूण के अलग अलग पार्ट जब जुड़ जाते हैं तो वो भ्रूण को पैदा करते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक शूद्र पार्ट है, वैश्य पार्ट है,
क्षत्रिय पार्ट है और जो है वो है ब्राह्मण पार्ट। मतलब कि जो पैरों की सप्लाई है, थाइस की सप्लाई है, आर्म्स की सप्लाई है और जो मस्तिष्क की सप्लाई है, फेस एंड नेक की। आप हैरान होंगे कि जब मैंने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एम्ब्रियोलॉजिकली ये पढ़ा, जो मैंने इस बुक में मेंशन किया हुआ है डिटेल में, कि भ्रूण भी ऐसे बनता है। इसको हम टेक्निकली सोमाइट्स कहते हैं। जो डॉक्टर हैं, जो या एम्ब्रियोलॉजी के, जियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, ये नहीं कि ह्यूमंस में ऐसा होता है, और एनिमल्स में, सब में ऐसा ही होता है। फिशेस में आप पढ़ोगे और एनिमल्स में पढ़ोगे, जो हायर मल्टीसेल्युलर एनिमल्स हैं, उनमें इसी प्रकार से जो है हमारी डेवलपमेंट होती है। और इसी प्रकार से जो शूद्र पार्ट है वो आपस में जुड़ते हैं, फिर वैश्य पार्ट जुड़ते हैं, क्षत्रिय के पार्ट जुड़ते हैं, फेस एंड नेक जुड़ता है, फिर ब्रेन के अंदर जो हमारी इमोशनल इंटेलेक्ट है वो जुड़ते हैं, जिसको हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। फिर जो इंटेलेक्ट, ब्रेन का वो पार्ट, कॉर्टेक्स जो कहते हैं, वो जुड़ती है, और लास्ट में हमारा होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो ये सारा जो जुड़ के है, ये हमारे को, अगर आप नीचे से शुरू करेंगे, काम, बल, क्रोध, लोभ, मोह, चित्त, अहंकार को पैदा करते हैं। और ये सारे जब एक्टिवेट होते हैं, अब आप देखेंगे गीता में जो अल्टीमेटली जो ये बायोलॉजी दी है, इन सब पार्ट्स को ये हेट्रोजीनस है। अब आप समझोगे कि लास्ट में कंक्लूड कर रहा हूं, टाइम है सर? कैन आई स्पीक फॉर 2 मिनट्स? 2 मिनट में हम क्लोज करेंगे। तो अब द्वैत, ये सब जो है डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, ये हेट्रोजीनस हैं। जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा हेट्रोजेनिटी क्या होती है। डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट बायोलॉजी है। लीवर का काम अलग है, लंग्स का काम अलग है, और अलग किडनी का काम अलग है। तो ये अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं, जो ये अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग मटेरियल के, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के, केमिस्ट्री के बने हुए हैं। लेकिन जब इनमें होमोजेनाइजेशन होती है, तो वो होमोजेनाइजेशन कौन कर सकता है? कोई बता सकता है मेरे को कि ये सब कॉमन हो जाए, इनका सबका स्वरूप एक हो जाए? वो होता है ब्रह्मनाद। जब आपके शरीर से ब्रह्मनाद चलता है तो वो आपकी बॉडी को एक अद्भुत स्वरूप दे देता है। तो वो ब्रह्मनाद कैसे चलता है? तो गीता में आप देखेंगे जो ब्रह्मनाद का बहुत अच्छा पाथवे दिया गया है, जो उस पाथवे को हम कैसे डिफाइन करते हैं। उसके लिए सिंपल मैं एक वर्णन करूंगा कि आप सबने देखा होगा, अगर मैं आपको बोलूंगा कि उनका शरीर हिलने लगा, मुंह सूख गया, बॉडी कांपने लग पड़ी और उनके रोम रोम हर्षित हो गया, उसको ज्वर सा हो आया, उसके हाथों से गांडीव फिसलने लगा, वो खड़ा होने में असमर्थ हो गया और उसको वो भ्रमित सा हो गया, और लास्ट में उसके आंखों में से अश्रु की धारा बह निकली। तो ये क्या हो रहा है? जो अर्जुन के साथ ये चेंजेस हो रहे हैं, ये बायोलॉजी क्या है? तो अगर आप ये देखेंगे, इनकी अब मैं डिटेल में नहीं जा सकता, अभी टाइम नहीं है, पर यह क्लोज करना चाहूंगा कि ये भगवान वही अंशों की बात कर रहा है कि इसमें से जो शुद्ध अंश होता है, वो जो पैर को पैदा करता है, तो पैर कांप रहे हैं। जो क्षत्रिय अंश है, थाई कांप रहे हैं। मैं जो बल को पैदा करते हैं, एंटी ग्रेविटी मसल्स है, वो थाई को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता होगा कि तकरीबन 30 लाख साल पहले जो हम चिंपांजीज का जो स्वरूप था, उससे हम निकले। कैसे, क्यों निकले बताइए? कोई बता सकता है? क्योंकि 30 लाख साल पहले जो होमिनिड थे, पहले आदम जात थी, उसने चलना शुरू किया, थाई। तो थाई वही एंटी ग्रेविटी मसल्स की जो एवोल्यूशन है, डेवलपमेंट है। जैसे आज इन्होंने अवतार दिखाए ना आपको, 10 अवतार। 10 अवतार क्या है? ये एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ है। पहले मत्स्य अवतार, लाइफ इन वाटर, फिर एम्फीबियंस, तो कुर्मी अवतार। एंड आप हैरान हो जाएंगे, कोई मेरे से क्वेश्चन पूछेगा कि अगर कुर्मी अवतार में तो सर तो डायनासोर कहां गए? इसमें तो डायनासोर अवतार में इन्होंने दिखाई नहीं। लेकिन आप जान के हैरान हो जाए कि जब मैं अमेरिका गया, आई वॉन्ट टू हिस्ट्री ऑफ नेचुरल म्यूजियम, वहां एक बहुत अच्छा कार्टून बनाया था। उन्होंने लिखा डायनासोर्स के टाइम पे, जब बहुत ज्यादा 400 साल तक धुआं छाया रहा, एक वो पढ़ने के लिए एक पुच्छल तारा गिरा
और उससे 400 साल तक पृथ्वी धुएं से कर गई, तो जितने भी टर्टल थे और टॉर्टोइज थे ये समुद्र के अंदर चले गए और ये बच निकले। तो डायनासोर्स का जो एक आजकल कुर्मी अवतार बताया जाता है, ये डायनासोर्स का ही कथन है, उसका भी कथन लिखा हुआ है एवोल्यूशन में। और उसके बाद जैसे बताया हेरी एनिमल्स, हेरी मैमल्स आए, तो शेर उनका सिंह अवतार आया, नरसिंह अवतार आए। उसके बाद हेरी एनिमल्स के बाद जो आए वो ह्यूमंस आए। पहले ह्यूमंस छोटे होते थे तो वामन अवतार आया, उसके बाद ह्यूमंस ग्रो किए। तो ये एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ है। उसी प्रकार से जो एवोल्यूशन अगर आप देखेंगे तो पहले आदमी ने चलना सीखा, तो थाइस का जो एग्जांपल है एंटी ग्रेविटी, हमने चलना सीखा। उसके बाद हमने जो था आर्म्स, आर्म्स में क्या हुआ, ह्यूमंस पहले मंकी की तरह अपना जो अपोनेंस पॉलिसिस बोलते हैं, ये मसल नहीं थी हमारे में, इसको हम कलम पकड़ नहीं सकते थे। बंदर आज भी कलम नहीं पकड़ सकते हैं, चिंपांजी आज भी कलम नहीं पकड़ सकते हैं। जब हमने तीर चलाना होता है या कलम लिखनी होती है, पेंटिंग बनानी होती है, तो अर्थ पे अगर आप देखेंगे आदमी ने तकरीबन 3 लाख साल पहले पेंटिंग बनानी शुरू की, सिर्फ 3 लाख साल पहले। हम पैदा हो गए थे 30 लाख साल पहले, लेकिन जो पेंटिंग्स मिलती है केव पेंटिंग, वो सिर्फ 3 लाख साल पहले की मिलती है, क्योंकि उससे पहले हम ग्रिप नहीं कर सकते थे, चल सकते थे, ग्रिपिंग नहीं थी। और जो लैंग्वेज हुई, स्क्रिप्ट, अगर आप देखेंगे हड़प्पन स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की है, तो वो कब लिखी गई सबसे पहले, 4000 बीसी में। क्यों, हम पहले बोल नहीं सकते थे। ह्यूमंस ने कब बोलना शुरू किया, सिर्फ 50,000 साल पहले हमने बोलना शुरू किया। तो जो ऋग्वेद वगैरह बने, ओरल प्रैक्टिस पहले क्यों शुरू हुई, क्योंकि हो सकता है 8000 बीसी में, 7000 बीसी में, 6000 बीसी में शायद ऋग्वेद को इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। फिर लिखना कब शुरू किया, 4000 बीसी, 3000 बीसी, 2000 बीसी में, जब तक ये हड़प्पन सिविलाइजेशन लगी, उस समय ऋग्वेद को लिखा गया। लेकिन काफी चीजें, क्योंकि लकड़ी खत्म हो जाती है, पेपर खत्म हो जाते हैं, कपड़े खत्म हो जाते हैं, तो वो चीजें चलेगी, लेकिन जो पत्थर पे लिखा हुआ था वो आज भी बचा हुआ और वो हमें मिलता है। तो इस प्रकार से ह्यूमन की जो एवोल्यूशन हुई है उसको हम समझ सकते हैं। और ये शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, मेरा ख्याल अब आप ये सारे अंगों का जो है सप्लाई के हिसाब से एवोल्यूशन भी समझ गए हैं, उनका कनेक्ट भी समझ गए हैं, कैसे इन पार्ट्स के थ्रू एवोल्यूशन होती है, डिफरेंट सोमाइट्स हमारी बॉडी में बनते हैं, और कृष्ण भगवान ने किस तरह जो है अर्जुन को ये ज्ञान दिया। और उस स्पिरिचुअल बायोलॉजी की जो हमारी बॉडी में छुपी रहती है, जो ब्रह्मनाद हमारी बॉडी में छुपा बैठा रहता है, उसको सिर्फ भगवान कहते हैं उस म्यूजिक को, उस नाद को हमको रीडिस्कवर करना है, हम इन्वेंट नहीं कर सकते हैं। और मैं बहुत धन्यवादी हूं हमारे गुरु महाराज जो यहां आए हैं, हरे राम हरे कृष्णा वाले, इनके, क्योंकि देखिए कितनी सदियों से ऐसी ही प्रथाओं ने इस लिटरेचर को बचा के रखा। जो मैं ये आज किताब लिख पाया, ये इसीलिए लिख पाया क्योंकि गीता हूबहू याद की गई, लिखी गई, दोहराई गई, लोगों ने अपनी जान भी गंवाई होगी इसको बचाने के लिए, और वो आज लोग जिंदगी भर इसको पढ़ के, इससे आज भी ज्ञान की जो धारा है, जो अविरल धारा है, वो अभी भी बहती रहती है, और हम अपनी छुपी हुई स्पिरिचुअल बायोलॉजी को यूज करते रहते हैं। धन्यवाद। Thank you so much, Mr. Gupta ji, for presenting the spiritual biology. एवं परंपरा प्राप्त मिदम राज ऋषियो विदो सकाले नी महता योग नष्ट परंतपा। ये जो भगवद गीता का ज्ञान है, ये गुरु परंपरा प्राप्त है। गुरु परंपरा के माध्यम से ही इस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। और भगवान के इस गीता को ज्ञान को समझने के लिए हमें एक चीज को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर हमें दवाई देता है, तो दवाई हम अपनी मर्जी से खाएंगे या डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से। अगर हम अपनी मर्जी से खाएंगे तो क्या होगा, दवाई उल्टा काम करेगी। तो डॉक्टर ने अगर दवाई दी है तो दवाई के साथ साथ उसको प्रिस्क्राइब भी किया है कि आपको कैसी डोज में खाना है इसको। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी जो मर्जी है। उसी ही प्रकार से ही भगवान ने गीता में क्या कहा है उसको स्पष्ट कह दिया, एवं परंपरा प्राप्तम इदम राज ऋषियो विदो सकालीन ई महता योग नष्ट परंतपः। ये अर्जुन, मैंने ये ज्ञान सबसे पहले पूर्व काल में सूर्य को दिया, उसके बाद इक्ष्वाकु को दिया, काल से ये लुप्त हो गया, अब मैं पुनः उस ज्ञान को आपके समक्ष कह रहा हूं। तो हम
दवाई लें, दवाई के साथ साथ सही डॉक्टर का चुनाव करें, यह भी अत्यंत आवश्यक है। तो विशेष विशेष धन्यवाद के पात्र हैं हमारे डॉक्टर पुनीत गुप्ता जी, आपने इसको प्रस्तुत किया, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया, उसमें धन्यवाद आपका। अब आपका और अधिक समय न लेते हुए यूएस से हमारे श्री सचिन अग्रवाल जी आए हैं। यह एक यंग एस्पिरेंट हैं, भगवत गीता के ऊपर लेक्चर्स देते हैं। स्टूडेंट्स से, यंगस्टर्स से इनका बहुत इंटरेक्शन होता है और इन्होंने भगवत गीता को किस तरीके से मॉडर्न एज में अप्लाई किया जा सकता है, उस मॉडर्न एज एप्लीकेशन के लिए ही हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप आइए और भगवत गीता के इस प्रेजेंटेशन को हमारे सामने प्रस्तुत करिए। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज वेलकम सचिन अग्रवाल। And also, I request Professor K.P. Singh to please honor. This one. Second. Hare Krishna. Hare Krishna. Namaskar everybody. Good afternoon. Thank you very, very much for giving me this kind opportunity to be able to talk to you today about the Bhagavad Gita, both in the modern age and also how we can apply it to our lives today. So, I will be a very different speaker, I think, compared to the previous very scholarly and very intelligent speakers. I'm just let's keep it very casual and let's keep it very light. And I will try to just give you some lessons that I've learned myself throughout the life from the Bhagavad Gita, and hopefully you all can apply them too. So if you have any questions, or if you have any doubts, or if you would like me to clarify, you can feel free to raise your hand during this talk, and I'll try my best to answer them. So before we begin, you must be wondering, well, why is this guy standing here? And he's come from the U.S., and they've introduced him, nor does he have any doctor in front of his title, nor does he have any abbreviations after his name. So I'll tell you a little bit about myself, and then we can take it from there. So I was, as you can probably tell from my accent, I was born and brought up in the U.S., and my parents went to the U.S. in Houston, Texas, in 1980. And they were a very simple family. They came from a gaon, from a village called Chhattar in Haryana. And they came with all of their cousins to the U.S., of course, seeking for a better life. Now, what's interesting is that at the time, of course, now it's very different, but at the time, it was pretty easy to get into the U.S. And colleges in particular wanted to have students from all different backgrounds. So they gave admission to even people like my parents. And what's funny is that they didn't really know much English. So when they went to school, when they went to the University of Houston, you can imagine they struggled quite a bit. And what's interesting is we hear a story, at least when our family gathers. And my dad and my uncles, they tell me a story about one particular uncle who studied it in the history class. So he went to the history class, and of course, not knowing much about history in general, he didn't do so well. So one day, the teacher asked him to stand up, and she asked him a few questions. And she said, Naresh, what was the last battle that Alexander the Great fought in? So then he thought, I have no idea. It must have been the battle where he died. Then the teacher said, okay, that's obvious. Then she said, okay, let me ask you another question.
Where was the Declaration of Independence signed? So he thought about it for a second and he said, at the bottom of the page. Then the teacher was very frustrated at this point. She said, okay, you're from India, right? So can you tell me, when was Gandhiji born? Then he said, on his birthday. And then finally she said, okay, you clearly don't know much. Let's ask something about geography. In your country, do you know what state the Ganga flows in? And he said, ma'am, liquid state. So you can see that I come from a background where we are certainly not Bhagavans, certainly not very scholarly. But one thing that my family did was work very hard. They did all sorts of menial jobs. Nowadays, when people go to America, they're all IT professionals. They're going for their PhD or master's. But at the time my parents went, my dad scrubbed oil barrels. He threw the newspapers door to door, and he cleaned the sewer equipment. So they came from basically nothing. But one thing they did was work very hard. And they instilled that behavior within us as a child. You know, one thing you learn in the U.S. is that if you're born from Indian parents, they made you work and made you study. Everything was about education because education was not available to them when they were young. So we hustled, and they worked. And as a son of a baniya, I was kind of a hustler in many ways. Do you all understand the term hustler? Nod your head. Hustler? No? Someone who works, jugaad karna. Yeah, jugaad karna. So in middle school, I used to sell Coke cans to make 25 cents. And in high school, I used to sell cell phones for getting $10. And I would do all sorts of little businesses to try to get some money, because there were two things that we didn't have when we were young. One was money, and number two was an education. So as a teenager, those were my two main priorities. All I wanted to do was study and make some money. So I started a lot of businesses just like my dad did. And at 16, I started a business that I'm still running today. So 20 years later, today, I'm standing here only because of some material qualifications. That is that we have one of the most successful e-commerce businesses in the entire country. We're in the top 1%. But one thing that I learned throughout this education and throughout these business endeavors is something that my beloved Guru taught me. Many of you all have mentioned that the Gurus, or those in the Guru Parampara, the lineage of Gurus, is what has passed down this knowledge from generation to generation. And in our Bhagavad Gita, or in previous history, Gurus were treated very differently than they are today. For example, when you all may graduate high school or middle school, how many of you have seen your teachers again? Any of you? Have you gone back to your middle school? Very few people. Very few people think about what they get from their teachers and how that helps them throughout their life. And if we think about it, and Krishna reminds Arjuna of this in the Bhagavad Gita, that we are not self-made men. We're not self-made men. Especially from a business mindset, we have this idea that I have achieved everything because I worked hard, I studied hard, I did the work, and yet I think I got the result. But the truth is, if you look at it, just like our previous speaker spoke about the body, and when one is born, we don't even know how to clean our own bottoms without the help of our mother or father. We don't know how to even read without the help of our teachers. We don't know how to
do anything in life unless someone guides us. So we have to give credit. And in the parampara system, that means honoring one's guru and one's teacher throughout life. So I was fortunate because one thing that American Indians are concerned about is that their children retain some cultural values. They're very concerned about that my beta does not become an ABCD. You know what ABCD is? American born confused Desi. Yeah? American born confused Desi. But he shouldn't become like this. He should know some Bharatiya Sanskriti. He should know something. So what did they do? They went to the temple. They went to the temple, and that's where they got the association of like-minded parents, but also people like Pujya Maharaji, who traveled the world spreading these bits of knowledge that helped us throughout our life. So one time, when I was 19 years old, something similar to today, and I had a lot of ego. I had a huge ego, because who doesn't have an ego when they're sitting at the top? So I remember I got my diploma that day, and I had just gotten admission into my master's program also. On the same day, jaise kehte hain na, sona pe suhaga. On the same day, I got two wonderful news in my life. And I'm on top of the world. By chance, my Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, was also visiting at the time, and he was at my home that day. So I finished my college graduation, I got my diploma, and I came home. And I came home to a large group of devotees, like the ones you see here today. And I came home, and I wanted to give the news to my Gurudev, that, oh, Gurudev, look at what I have achieved. By chance, one devotee next to me, he informed Gurudev that this bacha, this boy, has gotten this much success. And Gurudev, I was expecting that Gurudev would be very pleased. But what happened? He looked at me straight in the eye and he said, your wealth, your family, your education, and your ego will not save you in this world. Only and only the highest knowledge will save you. So, if you want to achieve success in your life, it will not come from these material gains, these material designations, and these material benefits. As soon as I heard that, it opened my eyes. Kehte hain na, Om Adyanti Nirandasya Jnananjana Shalakaya. That what does the Guru do? He applies the medicine of divine knowledge on the eyes of those who are ignorant. Because we are tied up in this world full of trying to achieve certain metrics, trying to be this or trying to be that, thinking that every single one of these metrics, if we get them, we'll become happy. Just one more is all I need. Just one more dollar. Just one more degree. Just one more follower. Just one more gadget. But one has to realize, and let me tell you from practical experience, that it doesn't matter how much you have, doesn't mean you will be happy. Because there are many millionaires and many billionaires in the world. But if you look at the richest amongst the rich, for example, Jeff Bezos, he's a billionaire. Yeah? He's a billionaire, right? Multi, one of the top 5 in the world. But what happens in his personal life? He's not happy with his wife. What happens to Elon Musk? He's not happy in his personal life. So though they may achieve so much material success, it doesn't necessarily guarantee that they're smiling before they go to sleep. So then one needs to think a little bit beyond just we call it the rat race.
The rat race of just getting the next thing. So how do we do this? Well, first, it always starts off with some desire. We have to have some greed. We say lobh in Sanskrit. We have to have some greed that we want to know more. So, Krishna says in the Bhagavad Gita very famously, Tad vidi paripatena pariprashnena sevaya upatekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshinaha. And what does that mean? That means if one is a sincere practitioner, no need to be perfect. No need to get everything right the first time. But if one is a sincere desirer of ultimate high knowledge, he first has to ask a question. He has to ask a question. Tad vidi pranipatena pariprashnena. Prashna. You have to ask a question. And then who do you ask that question to? You ask that question to someone who has the knowledge. Just like those of you who have joined this university. You don't come to this university, take the textbook, and then study it on your own and expect to get any success. Right? What do? You go to class. And why do you go to class? Because there's a who's at the class? The teacher. The teacher, because he's already gone through the process of learning, and now he's spending or she's spending their time to teach you. So a good student trying to achieve something has to first ask the question, and second, do it with some mood of service. Because when we surrender, when we have some mood of service, then we can also get the softer points of the highest knowledge. For example, there's a student who goes to the class, listens to the lecture, and then goes home and does the homework. But then there's also a student who goes to the class and then stays back after class and asks some questions. That student, for those of you who are teachers, that student you give some special mercy on. You give some special knowledge to, right? You give them the time and the energy. You put your energy into it in order for them to learn even further. So when we take this example from the Bhagavad Gita, it's the first step. You have to ask the question. At the end of the day, what is the Bhagavad Gita? It's a book of questions and answers. Arjuna asks questions and Krishna answers them. So when we ask these questions, we raise our doubts. Many people say, oh, we should have blind faith. But actually this Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, all of our scriptures, they're books of question and answer. There's no need to have blind faith. Lay out all your doubts and make sure you get them answered so that you can move forward. Now, I'm going to pause right here. I'm going to step away from this mic. And this works. And I'm going to take you through a little bit of a journey. And I'm going to take you through this journey because this is a similar journey to what I went through. Now, there's a very famous chapter. It's chapter 7 within the Bhagavad Gita. Okay? Chapter 7. Which chapter? Chapter 7. Alright? So if you go to the Bhagavad Gita, all of you have a copy of Bhagavad Gita? Make sure you get a copy of the Bhagavad Gita. Go to chapter 7. If you see the title of chapter 7, it says, Knowledge of the Absolute. That's the title. Knowledge of the Absolute. Now think about that title for a second. Absolute knowledge. And Krishna says right there in the first 2 verses that, hey Arjuna, what I'm about to give you is the most absolute, highest knowledge that you will ever hear. Can you believe that? The highest knowledge. And he says it is both phenomenal and divine. Who doesn't want that? Do you want the highest knowledge, Grim? Yeah? You want simple knowledge or you want the highest knowledge?
Highest. Yeah. After all, don't we want the highest fruit from the tallest tree? Where the best Alfonso mangoes are? They're at the highest, right? So not just the materialistic. Because he said it's phenomenal and divine. Not just material. Yeah? And then Arjun says, oh yes, Prabhu, Shri Krishna gave it to me. Yeah, I want it. I really do want it. And he says, then Krishna says, oh, but wait. Manushyanam sahasresham kaschit yatati siddhaye. Does anybody know what that means by any chance? Better you speak. He says, out of thousands of people, only one tries to become perfect. Only one tries. This prestigious university, how many are here? A few hundred? Yeah? And how many people are right outside the border of this university? Thousands? And forget about people. If we think about the souls, the jivas, the living entities, are there not millions of ants all around here? Millions of blades of grass? Are they living? Professor? Biology? They're living, right? They're each individual living beings, countless number of beings. Yet somehow we are lucky here because we are striving for something a little bit higher. So out of countless people, only one tries. And then he says something even more shocking. Out of all of those that try, only one get it. अरे भैया, ये तो बहुत बड़ा problem हो गया, है? It's rare upon rare to get the highest knowledge. Our Goswamis call this, our acharyas call it sudurlabha. That is very rare. So, what does rare mean? Can anybody tell me quickly what rare means? What's the definition of rare? Very simple. Anybody? Ma'am, would you like to say? In the green? You're wearing green, yes. Do you know the definition of rare? No? Anybody know the definition of rare? Less than 1%? Okay. Anybody else have a definition? It's not common. Yeah? Not easily available. Like, for example, let's take a very simple example. There's so many cars there, but how many are Mercedes-Benz cars? Very few, right? And that's why we value it, because it's rare. It's not common. We want those things that everyone else, exotic, yeah, another nice definition. So it is sudurlabha. So if one thinks that, wait, I want the highest knowledge, and I want the best thing, but you expect that everyone else will have it, then you are mistaken. You're mistaken. So, it also means that if you are wanting something, if you are wanting to be the best, then you should expect it that you're going to be a little bit lonely. You can't find the best thing and expect everyone else to also find it. Yeah? Because it's so easy to forget that. There's one famous quote, in America at least. It says, nothing worth having comes easy. Nothing worth having comes easy. Can you all repeat that? Can you say it with me? Nothing worth having comes easy. We're going to use that theme a lot today. Nothing worth having comes easy. And I want you to think about this in your life and also in your pursuit of happiness throughout your life. Because if you are expecting that if you follow the herd, if you follow the majority of people and expect to get the best thing, well, it's probably not going to happen. There's another famous saying in America. What is the definition of stupidity? What is the definition of someone who is stupid? Does anybody know?
The definition of stupidity is that if you do the same thing over and over again and you expect a different result, then you are stupid. So similarly, if we are doing the same thing that everyone else is doing and expect that, you will somehow get a different result, then that's probably not going to happen. So the problem is, though, we are very influenced. I have seen both in my own family and when I come here regularly that it's happening everywhere, frankly speaking, is that everyone gets influenced by Western culture, both by social media, by news media, by Bollywood movies, by Hollywood movies. It affects the way we dress, it affects the way we eat, affects the way we talk. It affects everything that we do, and yet we don't realize it sometimes. For example, in this country, the UK used to be the ruler of this country, correct? And the UK, the United Kingdom, British, they took a lot from this country. They took material wealth, they took tea, coffee, they took spices. They took so many things and they looted this entire country when they ruled it. But they forgot to take the highest wealth. They forgot to take the most important wealth. And if you think about it, the previous speaker said that we have something to give, not something to take. And when our Gurudev used to preach around the world, he said, I have not come from a poor India. I have not come to you all to take something. Instead, I have come from a very wealthy India, and I have come to give you something. So if you look at the charts of the most miserable countries in the world, does anybody know the number 1 or number 2 country that is the most miserable in the world? The UK. The UK is the number 2 most miserable country in the world. And the UK is number 1 in how miserable their children are. So despite taking all of this material wealth from India, they got the Kohinoor diamond, they got everything. But they're still not happy. So at the end of the day, that's a very prime example of what will make us happy. Material things won't make you happy. Stuff has utility value, not happiness value. And you will be outnumbered if you try to achieve something high. After all, in the Mahabharata, Arjuna, who was with the Pandavas, they had 7 Akshohinis, 7 sections of army, and the Kauravas had 11 Akshohinis. So they were outnumbered by 50%, but yet still, because they were fighting on the battle of the side of Bhavan, the side of goodness, then they became victorious. So when we think about this Bhagavad Gita and the messages that our scriptures have come to give, it is beyond this material world. It is beyond these material things which do not give us so much satisfaction. Instead, it gives us the highest goal of life, that is pure love. If we think what actually makes us happy in this world, it is only one and only one thing, that is pure love. Because if you have millions of dollars, or billions of dollars, but if you have no one to share it with, then it doesn't matter what you get or how you spend it. You will not be happy. When one develops pure love within the heart, that is known as bhakti. Our acharyas define bhakti as loving devotional service. Each of those words is very important. One must develop love within the heart. One must be one-pointed in devotion, and one must serve in order to become happy.
And when we perform this bhakti, this pure bhakti, as Shri Krishna says, Manmana bharamad bhakto madhyaji mam namaskuru mam iveshasi satyante pratijane priyasine. That if one engages their loving devotional service, their mind, their bhavna, their heart to me, then one can achieve happiness. Dr. K.B. Singh said something very nice when he spoke about Sri Radha. That Krishna provides practical knowledge. Very true. This Bhagavad Gita is a perfect example. And he provides transcendental practical knowledge. Yes, for our minds. Yes. But we don't just want to be smart here. We want to have love here. And so when we take this example of developing pure love within the heart, that comes from when we follow those who have pure love. And when we read about them, when we study their character, study the relationships, Srila Rupa Goswami says, Tad anuragi jananugami. When we follow them, then that pure love, which will make us ultimately happy, will actually develop within the heart. So with that, I would like to conclude. Thank you very, very much for giving me the time, and I hope that you all learned something. Hare Krishna. विशेष विशेष धन्यवाद सचिन प्रभु का, जिन्होंने भगवत गीता के सार को हमारे सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने विशेष करके जिस बात को कहा वो यही कि हर व्यक्ति प्रसन्न होना चाहता है। यहां पर कौन कौन हमेशा प्रसन्न रहना चाहता है? कुछ अभी सोच रहे हैं, पता नहीं सोच रहे हैं या थक गए हैं, कुछ भी है, पर लग रहा है सब, पर प्राय सभी प्रसन्न रहना चाहते हैं। अच्छा, कितनी देर के लिए प्रसन्न होना चाहते हैं? फॉरएवर, राइट? हम सब फॉरएवर प्रसन्न क्यों रहना चाहते हैं? क्या उत्तर है? अच्छा लगता है। ये स्वाभाविक भावना है हमारी कि यार मैं हमेशा खुश रहूं, मैं भी खुश रहूं और दूसरे भी खुश रहें। इसको वेद ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है। वेद कहता है कि दुखम मां मांग भूत सुख प्राप्ति के लक्ष्य है। सुख के अतिरिक्त कोई और कुछ चाहता ही नहीं। पर विचार करके देखें, क्योंकि मैं अभी स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सेशन में हम लोग आ रहे हैं अब, जहां हम स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे। आपके मन में जो भी आ रहा है, क्योंकि कैसे पता चला था कि आप सुन रहे थे कि सो रहे थे, है ना? सोने और सुनने में कैसे पता चलेगा? आपने कुछ सुना है तो मैं कहता हूं उसकी परीक्षा भी होनी चाहिए कि आपने सुना भी है कि नहीं सुना है। तो एक तो हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं जो पूर्ण हो जाती हैं। शारीरिक आवश्यकताओं के बाद हमारी मानसिक आवश्यकताएं हैं जिसकी पूर्ति के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। पर सारी शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात भी कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि कुछ रह गया है, कुछ रह गया। तो गीता उसी एक रहस्य को ही डीकोड कर रही है। आप लोगों का समय लिए बिना मैं बीच में आकर के, पहले तो यहां किसी स्टूडेंट को कोई प्रश्न हो तो आप बता सकते हैं, कोई भी प्रश्न आप लोग पूछना चाहें। भगवान कौन है, गीता क्या है, क्यों है, हम यहां क्यों बैठे हैं, किसी का कोई भी प्रश्न हो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं तो मैं आकर के आपसे प्रश्न पूछूंगा कुछ देर के लिए। तो जिसमें भलाई हो वही कर सकते हैं। आप अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। नमस्कार। थोड़ा सा प्रश्न मेरा इससे थोड़ा सा अलग हटके है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही अलग हटके है। प्रश्न ये है मेरा कि कभी कभी बड़े सामंजस्य में आ जाती हूँ कि वेदर एक हमारा हैप्पीनेस है और एक हमारा राइट है, कि हमें हैप्पी और राइट में क्या हैप्पी होके हम राइट हो सकते हैं या राइट होके हैप्पी हो सकते हैं, या दोनों ही होना चाहिए? किस तरीके से इस प्रश्न का समाधान हो सकता है?
आपके प्रश्न को अगर मैं समझ पाया, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि 1:30 बज गया है और इसके बाद हमारे भक्त एक लीला भी करेंगे। तो प्रश्न ये है कि क्या मैं प्रसन्न भी रह सकता हूं हमेशा और साथ ही साथ ठीक भी रह सकता हूं, मतलब मेरा मार्ग भी ठीक हो और मैं प्रसन्न भी हूं। एक व्यक्ति घोड़े पर सवार है, घुड़सवारी में सुख किसको मिल रहा है? जो घोड़ा चला रहा है। और घोड़े को क्या मिल रहा है? दुख। तो इस जगत में प्राय देखा जाए तो एक व्यक्ति का सुख किसी दूसरे का दुख बन जाता है। माता है कहां पर? किचन में है, क्या बना रही है? खाना बना रही है। सुख किसको मिल रहा है? बच्चे को। जो हीट है किचन की किसको मिल रही है? माता को। तो एक व्यक्ति का दुख और दूसरे का सुख, ये जगत रिलेटिव है ऐसा। पर क्या ऐसा हो सकता है कि मैं भी सुखी रहूं और दूसरा भी सुखी रहे? अवश्य संभव है। उसको ही भगवान ने गीता में बड़े स्पष्ट रूप से 7वें अध्याय में कहा है। भगवद गीता के 7वें अध्याय की भी बात कह रहे थे। उस भगवान ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि अपरयम इति तु अन्य प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूत महाभाव ये जब धारते जगत मनेवांश जीवलोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान कह रहे हैं इस बात को, मम एव अंश जीवलोके, जितने भी जीव दिख रहे हैं सारे के सारे, ये सब कौन है? मेरे अंश है। एक प्रश्न पूछो, अग्नि जलाते हैं ना हम, अग्नि कहां जाती है? अग्नि की दिशा क्या होती है? क्यों? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से आप सब लोग, अग्नि ऊपर क्यों जाती है? बोले हमसे पूछ तो नहीं जाती, अपने आप जाती है भैया। क्यों? क्योंकि सूर्य ऊपर है, अंशी ऊपर है। सूर्य अंशी है, अंशी माने पिता है, जिससे सारा अग्नि तेज प्रकट होती है। तो अग्नि जलाएंगे तो कहां जाएगी? अंश हमेशा अंशी के पास जाकर के ही सुखी हो सकता है। जल फेंको तो कहां जाएगा? नीचे। क्यों? क्योंकि समुद्र कहां है? नीचे है। तो अंश अंशी के पास अपने आप जाता है, अपने आप सुखी होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग एक साथ मिलकर के भगवान के निकट जाएंगे तो स्वयं भी सुखी हो जाएंगे और दूसरे को भी सुख कर देंगे। और इसीलिए आपके प्रश्न का उत्तर है कि हैप्पीनेस और राइट दोनों एक साथ हो जाएगा। मैंने प्रयास किया आपके प्रश्न का उत्तर देने का, क्योंकि जो भगवान का अंश आपके भीतर है वो आपके साथ वाले में भी है। स्त्री हो पुरुष हो, सब में भगवान विराजित है ना कि नहीं है? इसमें तो कोई संशय नहीं है ना। तो जब सब में ही भगवान विराजित है, पर हम एक दूसरे को जब अपने संबंध से देखते हैं तो राग द्वेष हो जाता है, ऊंचा नीचा हो जाता है। पर जब हम एक दूसरे को भगवान के संबंध से देखेंगे, चश्मा बदलना है, अभी चश्मा कुछ और चला हुआ है, चश्मा बदल जाएगा। भाई जगत में क्या है, दृश्य कभी नहीं बदलता है, दर्शन बदलता है, तभी दृश्य बदलेगा। हमें अपने दर्शन को बदलना है और भगवद गीता वेदांत का सबसे मूल दर्शन है। तो मैं तो चाहता था कि सेशन और बड़ा हो, स्टूडेंट्स कुछ प्रश्न पूछे, पर समय की अपनी ही सीमा है, क्या करें। मैं स्टूडेंट्स के नंबर्स वगैरह सब ले लेंगे। हम लोग अभी 5 मिनट के लिए हमारे एक माखन चोरी लीला है। हमारे वृंदावन में कहावत है कि मधुरेण समापयेत। प्रसाद दे दिया ना तो मीठा कब प्रस्तुत करते हैं? पहले आवाज में। वो लाइन में थोड़ा सा कुछ मीठा, कुछ मीठा हो जाए तो कुछ मीठा ही हम लोग वृंदावन की बड़ी मधुर मधुर लीला हमारे भक्त लोग यहाँ पर आएंगे, उसको करेंगे। और उसके पश्चात हम अंत में अपने वाक्य में जितने भी हमारे यहाँ पर सभा में जितने भी हमारे सदस्य आए हैं, जितने भी ऑनरेबल गेस्ट आए हैं, उन सबको आगे करके हम इस सभा का समापन करेंगे। हरे कृष्णा। So I request all the devotees to please come and perform that Makhan Chori Leela. Yeah, oh, sorry. Hare Krishna. So our most heartfelt welcome to all dear students, faculty members, guests, and devotees, headed by our spiritual master,
Pujapat Srimad Bhaktivedanta Siddhanti Maharaj. So today, we want to take you on a journey to a very, very special place. This place is the very sacred and sweet land of Vrindavan, known as Vrindavan Dham, as you all know. This land is the very home of Swayam Bhagavan Sri Krishna Chandra, where he took birth and performed his sweet childhood pastimes. Krishna is known for being Makhanchor, a butter thief. He would go out every day to the houses of different gopis to steal their freshly churned makhan. And the gopis would often complain about this to Maya Yashoda. Govind Damodar Madhaviti, Govind Damodar Madhaviti, Govind Damodar. Yashoda! Hey Prabhavati, what happened? Kanhaiya is always coming to my house and stealing all the butter. Believe me, he comes to my home every day and eats all the butter. I will only believe you when you catch my Kanhaiya red-handed and personally bring it to me. Oh, is that the case? Acha, theek hai. I will be more alert from the next time and caught him red-handed, and then will bring in front of you with butter in his hands and mouth. I'm going to steal butter from the gopi. But if I go alone and that gopi will catch me, then she will punish me. That's why I will go with my friends, so I'm not the only one who will get punished. Yes. This sweet makhan is so delicious, even from the nectar of Swargalok is nothing compared to this sweet, sweet makhan. O Karna, you are maintaining us better than Vishnu by giving us this delicious butter. Kanhaiya? आज नहीं छोड़ूंगी. Kanhaiya, your mother Yashoda never believes that you are stealing makhan in my house. Today I caught you red-handed. You thief! Oh Maya, मेरा विश्वास करो. Please believe me. I didn't come to steal butter. I came. Oh, because there's one of my cow junches in your pot. There. Oh, really? Acha. Are you trying to trick me? Oh, sure. Where is your cup? If you let me go, I can show you. Oh, sure, please. Go, a little further. Look! Here's my cup! Oh, Kanhaiya. Next time if you come to my house, I won't spare you. The next day, Krishna and his friends again came to the house of Prabhavati.
कन्हैया, आज नहीं छोड़ूंगा। This is it. That's enough. I will bring you to Yashoda right now. Oh, Maya. What happened? My hands are so soft and tender. And your hands are so big. Okay, give me your other hand. Yashoda? Hey, Yashoda! Today I caught your Kanha red-handed stealing butter in my house. Look, here he is. Are you crazy? Look carefully who you got here. Arey, Beta, my son, what are you doing here? Where is Krishna? Oh my God, look! She's falsely accusing me of stealing butter in her house. I just was sleeping here. And she says I came to steal butter at her house. Oh, Kanhaiya, you're very clever. No one can win from you. So we just saw this wonderful Krishna's Balya Leela. Even though Krishna is the Supreme Personality of Godhead, He descends on this earth and performs such sweet pastimes. But there is more. Let us go now to Varsana, the place of Srimati Radharani. Actually, all of Vrindavan is the heart of Srimati Radharani. And what do all the people say in Varsana and Vrindavan to greet each other? I cannot hear you. Those in the back also. Wonderful. So in Varsana there are two mountains. Brahma Parvat, which is Brahmaji in a mountain form, and Vishnu Parvat, which is Vishnu in a mountain form. In between these two mountains, there is a very narrow passageway called Sakari Koi. The gopis would walk through this passageway while carrying the pots of milk and yogurt. And Krishna and his sakhas would always come and obstruct the gopis, demanding the yogurt, butter, and milk from them. One day, the gopis, being tired of the daily situation, they made a plan to teach Krishna and his sakhas a lesson. So we will witness that part. Oh, Radhe, I'm so tired of this. Every day that we pass through these narrow passageways, Shamsundar and his naughty friends, they plunder our yogurts. Vishaka, this is always happening. Lolita, do you know what to do to stop this? I know. We should teach that Krishna and his sakhas a good lesson, such that he never ever dares to tax us again. I have a plan. Tomorrow morning, we'll go early, and we'll go and hide behind the bushes, and then one of us will walk with yogurt and milk, and the moment that Krishna and his friends stop us, she'll call out, and we'll catch Krishna. And the next day came.
Hey, Gopi! Oh, Gopi! What are you carrying? Smells like very delicious. Yogurt and milk? Oh, Gopi, stop. To pass through here, you must pay tax. Oh, Lita, please save me. I'm very hungry. I'm a poor Brahmin boy. This freak of Krishna he has tricked me. Oh, please, forgive me. I will never do this again. In this way, the Sakhas learned their lesson. Meanwhile, Radharani, Vishakha, and some other gopis, they captured Krishna. Then, they forced Krishna to wear a blouse and skirt. Here, Krishna, put this veil on. Take this pot and dance for us. Hey, Gopi, give us tax. Yes, you must pay us tax, and do it quickly, or else we'll plunder your yogurt. Will you dare ever charge the gopis tax on yogurt again? From this day, vow that you shall never ever tax the gopis again. Hold your ears. Say it, Krishna, say it! From today, I will try to never tax the gopis again. In this way, Radha and Krishna are performing sweet leelas in Vrindavan, even though Krishna is Swayam Bhagavan himself. Let's just see what kind of relation the Vrajavasis have with Krishna. They love him like their friend, their son, their beloved. They prove that Krishna is completely conquered by bhakti, because bhakti attracts Krishna. So a big round of applause for all the participants. And I request all the participants to come forward. We would like to honor all of you. Please come forward. The naughty sakhas. To all the naughty sakhas, all the gopis. Everybody please come forward. ताली बजाने बड़े कंजूसी करते हैं डीओ वाले हैं.
हरे कृष्णा। आप लोगों ने बहुत सारे प्रवचन सुन लिए, मुझे लगता है आप सब लोग थोड़े फ्रेश हो गए, राइट? अब मैं ये नहीं कह रहा कि हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं बोलना, डोंट वरी। बस इतनी बात बताना चाह रहा हूं, जिस भगवत गीता की आज हम बात कर रहे थे, दैट भगवत गीता इज अ फाउंडेशन विच गोइंग टू लीड अस टू दिस लेवल ऑफ absorption in the pastimes of Krishna. गीता में भगवान ने बस प्रवचन दिया है, लेकिन उस प्रवचन का, उस फाउंडेशन का जो सार है, जो एसेंस है, वो भगवान की ये सुंदर सुंदर लीला। इतने बड़े भगवान माखन चोरी करेंगे? उनके पास कुछ और नहीं चोरी करने को। इतने बड़े भगवान ऐसे अपने फ्रेंड्स के साथ और सखियों के साथ राज करेंगे? उनके पास और कुछ नहीं है। उसके बहुत रीजंस हैं। हम लोग बचपन से देखते आए हैं और बहुत कमेंट्स करते हैं, अरे कृष्ण वाह, कितनी गर्लफ्रेंड्स थी उनकी, कितनी सखियां थी। बोले सबसे बेस्ट तो यही है, राम जी की तो एक ही पत्नी और कृष्ण के तो हजारों लाखों गोपियां। ऐसे कॉलेज में स्टूडेंट्स जब हम थे तो बड़े बड़े कमेंट सुनते थे और बोलते थे। लेकिन ये सब बातें हमारे दिमाग में जो रहती हैं, वो तब तक रहती है जब तक हमको भगवत गीता की नॉलेज नहीं होती। लेकिन बिलीव मी, मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट ही था, स्कूल कॉलेज में पढ़ा हूं। हम भी यही सब सोचते थे, यही सब विचार होते थे हमारे अंदर। लेकिन जब भगवत गीता पढ़ी, और सिर्फ अपने पढ़ने पर नहीं, किसी गाइडेंस में, when we are reading Bhagavad Gita under someone's shelter guidance, then we come to know who is Krishna and why he is doing all these activities. What is the purpose behind this? It's just for his own enjoyment, or is there anything for our deliverance? Both purpose got solved by performing this. Because Krishna is not an ordinary human being. A vice chancellor, sir, he came here and we feel so honored and privileged that he came here. Vice chancellor of Delhi University. Imagine if the Prime Minister, Mr. Modi, comes here and he shake hand with you, how you feel? He's the Prime Minister of the country. We feel so honored and privileged. And when I'm speaking about Krishna, he's not the President or Prime Minister of a country. He's the Lord of universes. If he's stealing butter and if he's dancing with his gopis, there's a purpose, there's an intent, there's a reason, and which is very high and very deep. But we don't understand this as students because we don't read Bhagavad Gita, and this is because we are not taught Bhagavad Gita in universities. But when we go detail into reading Bhagavad Gita and understanding Bhagavad Gita, then this is the essence. Why Krishna is dancing, why he is doing so ordinary activities, is for his enjoyment and for our deliverance. And there are many other purposes. They are young ones from many countries, Germany, America, Netherlands, London. The boys and girls, they are students. They also study in university. They read Bhagavad Gita thoroughly. They understood Bhagavad Gita. And not only that, they practice spirituality every single day of their life. And there's so much transition happened in their life. They feel their life got changed. And they are same. They are like studying. They are in the universities. And they are working. But their life got changed because they learned, they heard, they learned, they practiced Bhagavad Gita. This is the transition. This is the happiness we can derive from reading Bhagavad Gita. And that's why I'm insisting, Delhi University, all the deans and principals, everyone is here. Please help the society,
help the country and help the world by introducing Bhagavad Gita in our syllabus. Because we want everyone to be happy, and only way of happiness is spirituality. There's no other way of happiness. Only spirituality can lead us to happiness, and on the other top level, blissfulness. So this is my humble request. Please give big clap for a light applause for all these devotees here. Wonderful performance. And by saying so, I'm thanking everyone, all our honorable guests, especially our Professor K.P. Singh. I have no words to say thanks to you, indebted to you for making a good connection with all those principals and deans here, and especially Vice Chancellor. I never ever thought in my dream I'm going to see Vice Chancellor in my life, even when I was a student. But today, by Krishna grace, I was able to sit with him, shook hand with him, and we had very wonderful dialogue. And he told me, I got a news, they're going to add Bhagavad Gita as a syllabus, me and my team. Because of the good impression of our society, which is international society, he got so impressed, we're going to introduce syllabus, Bhagavad Gita as a syllabus. Me and my team going to form a syllabus, and we're going to hand over to you. And in this way, we can work together. We are preaching Bhagavad Gita all over the world. But we were looking for this foundation. And this foundation, this mission started from this Gandhi Bhavan under guidance of Professor K.P. Singh. I'm so much thankful to you, sir. And all the respected students who came here, I want you to go and spread this word and preach everyone. And next time when I'm going to come, I'm going to bring more people with more speeches and more dramas to make everyone very happy and entertaining you. Yeah. So keep in contact. And the best connection. अच्छा थोड़ा हिंदी में बोल देते हैं. क्या होता है, हम इंडियन है ना, वो जब तक हिंदी नहीं बोलते डाइजेशन नहीं होता. सबसे अच्छा कनेक्शन हमारा प्रोफेसर के.पी. सिंह जी के साथ और वाइस चांसलर के साथ, गांधी भवन के साथ, मैम बैठी थी, प्रिंसिपल है, डीन है, इन सबके साथ एक जो कनेक्शन जिसने हमारा इन सबके साथ जोड़ा, वो पंजाब यूनिवर्सिटी से ये डॉक्टर मधु मिंदा जी आई हैं. मैं इनका विशेष धन्यवाद करना. आप खड़े हो जाइए, एक मिनट खड़े हो जाइए. लेट एवरीवन सी यू. बिग क्लैपिंग फॉर हर. शी अरेंज दिस along with her husband. इन्होंने अरेंज किया ये प्रोग्राम, and I truly believe it was a very successful program. This is only one sample. अभी तो फिल्म बाकी है. हरे कृष्णा. थैंक यू. मैं महाराज जी से निवेदन करता हूं कि वो अभी स्टेज पर ही रहें, क्योंकि कुछ विशेष गण यहाँ पर आए हैं. सबसे पहले मैं प्रोफेसर इंद्र मोहन जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पे आए और महाराज जी से आशीर्वाद जो प्राप्त करें. अब मैं निवेदन करता हूं प्रोफेसर एम के कक्कड़ जी से, वो भी आए और महाराज जी से आशीर्वाद जो प्राप्त करें. हम समय सीमा का ध्यान रख रहे हैं. आपको भोजन से और देर वंचित नहीं करेंगे. आपको भूख लग रही होगी, बस कुछ क्षण और. I also asked Professor Savita Roy to please come. Professor Savita Roy.
मैं निवेदन करता हूं श्री राकेश शर्मा जी से, प्लीज आइए। Then I request Shri Rishi Sharma ji to please come. We only have few more names, don't worry. Only few more names. Yep. Shri Sanjeev ji from Rohini. Shri Sanjeev ji from Rohini, please come, आप आइए और महाराज जी से आशीर्वाद जो प्राप्त करिए। और सिर्फ 30 सेकंड लेकर के एक बात कह करके अपनी बात को मैं शेष करूंगा। अंजुमिन ठाकुर, मैंने नाम गलत, अच्छा, मधुमिता जी प्लीज आप आइए, जल्दी आइए। अंत में सिर्फ 30 सेकंड लेकर के आप काउंट कर सकते हैं, हम इसको शेष करेंगे। रामायण में एक बात कही गई, जब श्री राम जी का जन्म होने लगा ना, कि राम जी का जब अभिषेक होने लगा, तो वशिष्ठ जी ने एक बात कही कि जिन्होंने इस राम जी के लिए ये जो पंडाल बनाया है, सब साधुओं के लिए सेवा करी है, बड़े बड़े राजा सब लोग आएंगे ना, तो उन लोगों को विशेष स्वागत करना, क्योंकि अगर वो लोग ये काम ना करते तो हम लोग नहीं बैठ सकते थे। तो हमारे जो सेवक गण हैं, उनमें श्री संजीव जी, श्री अशोक जी और श्री बलबीर जी, आप तीनों से मैं विशेष हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि आप आइए। इन्होंने इस पूरे के पूरे पंडाल को सजाया, हमारे लिए बैठने की व्यवस्था करी, तो उनका विशेष स्वागत करिए आप लोग। सारी रात यहीं पर थे, इसलिए हम बैठ पाए। और अंत में हमारा YouTube पेज है, आप वहां देखिए स्कैनर लगा हुआ है। महाराज जी का जो फेसबुक पेज है वो बीवी सिद्धांति महाराज करके फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं, अगर आप उसको स्कैन करेंगे एक बार तो सारा लिंक आपके पास आ जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, रिक्वेस्ट है प्लीज अपना नाम, अपना नंबर, कोई कॉन्टैक्ट हमें दे करके जाइएगा, सो दैट वी कैन स्टे इन टच विद यू। बारिश तो हो गई आज, लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग करना बहुत जरूरी है, सूखा ना फिर पड़ जाए, इसलिए अपना नंबर जरूर दीजिएगा, हमारे लोग पीछे खड़े हैं। यही कहकर के मैं अपने वचनों को विराम देता हूं और संपूर्ण डीओ का विशेष धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें यहाँ पर अवसर दिया हमारी बात कहने का। आज संबंध आरंभ हुआ है और उम्मीद यही है भगवान की कृपा से ये संबंध उत्तरोत्तर वर्धित होता रहे, बस यही प्रार्थना है। अब आप सभी भोजन पे आमंत्रित हैं।